Yeah, good evening, Vijay Praveen, and all the participants out there. अच्छा मार्केट ने आज एक गैप डाउन देके एक रिवर्सल दिया. सो आई एम हैविंग अ सिंगल स्क्रीन. सो एक बार हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोड जो हमने मॉर्निंग में आज डिस्कस किया था कि टुडे यू हैव टू फॉलो द डेली एटीआर. हाउ मेनी ऑफ यू सॉ द एटीआर? गिव मी अ यस और अ नो. कितने जन ने आज एटीआर देख के काम किया था? कमलेश says I did. I'll just show you. It's so simple. जब भी मार्केट इस तरह के पैनिक में खुलता है ना, तो आपको पैनिक नहीं करनी है. देखिए गैप डाउन अगर 1 एटीआर पे खुलता, जिसका हमें जो इंडिकेटर इसके लिए हम यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड डेली एटीआर लाइन. देखिए कभी भी मार्केट जब नेगेटिव खुलता है तो वो एक डाउनसाइड की एक बाउंड्री हो जाती है. सॉरी, आई हैव नॉट शेयर्ड माय स्क्रीन. वन सेकंड. या आई विल जस्ट शो यू. Yeah. So first, let me read out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. अगली बार आप याद रखो, इस तरह का मार्केट जब गैप डाउन हो रहा है, गुनापाल, एनीबडी हु ऑब्जर्व टुडेज एटीआर? देखिए जब भी मार्केट इस तरह के पैनिक में खुलता है, जैसे इस दिन खुला, तो वो एटीआर के आसपास आता है. अभी बाउंस होगा या नहीं वो आपको बाकी इंडिकेटर से पता चलेगा. अतुल खन्ना सेज आई वाज लेट. ओके, टुडे आल्सो जब मार्केट गैप अप किया तो 1 एटीआर पे, और इसलिए मैंने देखिए वो सबस्टैक पे मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे इस पे, डिटेलिंग प्लस रिकॉर्डिंग करके रखी है. इतना गैप डाउन के बाद एटीआर से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बाउंस आता है. जब मैं मेजॉरिटी बोलूंगा तो मोर देन 90% ऑफ द टाइम. How many of you observed this? Give me yes or a no. Atul? So market just hit 1 ATR on the downside and recovered. Kamlesh says I did. Other than Kamlesh, anybody else जिन्होंने आज follow किया? Yeah, Kamlesh is telling me yes. Chetan says yes. Yeah, Chetan I know. Mr. Chetan Nag from Bangalore. Atul says yes. So it's so simple, right? आप कभी भी देख लो, जब भी पैनिक डिक्लाइन आता है, सी दिस आर रेयर केस, कुछ इवेंट हुआ होगा या बॉम्बिंग ईरान का हुआ होगा एंड ऑल दोस थिंग्स. अदरवाइज इट्स एन ओवर बिग गैप डाउन. So now I'll not discuss over here anything intraday, but still I thought let me tell you. If somebody has not watched it, please go through that article. I have in the link comments, I have written that. So now Nifty में हम लोग क्या देख रहे थे? What we were seeing, this gap was filled, and we said that to go right, look left, and now this gap is filled. So now number one is you're learning very clear that common gaps which get created, जो common gaps रहते हैं इस तरह के, and fill the gap. Everybody got Chetan? So that minimum price objective जिसके साथ हम काम कर रहे थे, हम देख रहे थे, that has been achieved. The common gap has been filled. Now what next? Will there be a big reverse? Will that be a basing? वापस से I'll go back to basics, which means this gap got filled. And over here we had reversal patterns. इस तरह का एक consolidation मिला. The gap has gone filled. Now over here also, now we will wait for some consolidation pattern or reversal candle. Does it sound logical? Don't jump. हो सकता है गैप टूट के नीचे भी आ जाए. Keep on giving me yes if everybody has understood. Okay. जो स्ट्रक्चरल डैमेज था मार्केट का from the momentum perspective, that was the 50 DMA. Let's go and check where the 50 DMA is.
So right now अभी हम देखने जाए तो the 50-day moving average for the market, it has closed below this. So now any declines can go down, नीचे जा सकता है. जब तक मार्केट 50 डे में क्रॉस नहीं कर सकता, हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक रिवर्सल्स है. Abhijit says, 1 second, let me read your question, Abhijit. Can you give details of ORB, what it means? See, at the start of the session, Abhijit, see in Trading Titan Substack, there is a detailed note on ORB. Go through it, Abhijit. Got it? So now till 50 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जा रहा है, till that point of time, we can't say anything. But another thing what we saw was that whenever prices are declining, this is an A, B, and C. See over here, lots of low is in place wala indication aa raha hai. First is A equals to C. What does that mean? I'll show you. See, we regular in the sessions I have explained you so many times. This is the A leg, then the bounce was a B leg. First rule says rule of equality, which is then this leg should be equal to the previous decline. So more as that was close to 3% and this 3% has achieved. Now you know what do we mean by rule of equality, A, B, C. Somebody had told me explain in detail. So this down leg is the A, pullback is the B, this is the C. Everybody clear? This is how you'll have to keep on measuring. Now, another pattern has got developed over here. I'm drawing a reverse channel. First, I'm connecting the highs. And now I'm connecting the lows. So earlier what we were following, हम लोग ये channel follow कर रहे थे. Now from here on, we are going to follow this channel. The moment you have a channel, आपको depth measure करनी है. The depth is only 3%. ये मार्केट जो है कुछ भी करो 3% के रेंज में अटक जा रहा. आर यू नोटिसिंग दैट थिंग? सो नाउ एट दिस ओवर हियर, यहाँ पे यू हैव द मिडिल लाइन ऑफ द चैनल प्लस द 50 डीएमए. अभी ये चैनल फॉलो करना धीरज भाई. And till now we don't get close above the middle line, we rule out any possible pullback. From here on, we will follow this channel on a daily basis. Now, the second thing, let's go and check. एक बार Bollinger Bands के साथ check कर लेते. देखिए मार्केट ओवरसोल्ड हो गया डेली पे, ओवरसोल्ड यहाँ पे भी हुआ था. Fine? तो अभी देखिए हम ऑब्जर्व करेंगे क्या यहाँ पे एक बेसिंग का माहौल बन रहा है. एक बार वीकली भी चेक कर लेते. आई विल राइट द डिटेल वीकली नोट. देखिए डेली का लोअर है और वीकली का मिडिल है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक लो इज इन प्लेस. स्टिल वी डोंट सी एनी फर्दर वीकनेस. कॉन्फ्रेंस दिखा रहा, इट्स जस्ट एंटिसिपेटरी नेचर कि जो डाउन स्विंग है उसका जो हम लोग कैलकुलेशन के बेस पे हम लोग चल रहे थे, A इक्वल्स टू C और फिलिंग ऑफ द गैप और लोअर बोलिंगर बैंड, ऑल ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि नीचे नहीं जा सकता है, रिवर्सल नहीं हो. लिए वी नीड सम टाइम एंड ऑब्जर्व इट. एम आई राइट कमलेश और शबाकी? Yeah, it broke the weekly range. It's done. Direction has changed to down. It says that now you have a lower high and a lower low. So ये जो channel है शबाकी, this channel is taking the shape of now a downtrend. Can you see? Lower highs and lower lows. Got it now? So if that's a lower high and the lower low, the pullback don't go beyond 62% upper end of the channel. So now our life as a trader will be within this channel till we don't see a close below the channel. Even tomorrow, if let's say Monday market declines from here all the way till here 1%, it is still within the channel. यहाँ से आपको ये चैनल छोड़ना नहीं है. Simple. Your life is within the channel as a trader. Got it? Dheeraj, do you agree? Kamlesh, Abhijit, Vijay, Chetan? Atul says yes.
सो दैट्स निफ्टी. डोंट टैक्स योरसेल्फ टू मच. क्या होगा नहीं होगा, जो हो रहा इट इज वेरी वेरी वेल डिफाइंड. जो हो रहा है वो पैटर्न के रूल्स ऑफ पैटर्न के अंदर ही हो रहा है. मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, इधर ही रहेगा. हर एक लेवल पे 3% का रेंज बनाता है और इंट्रा वीक 1.5% का वॉलेटिलिटी में ट्रेड कर रहा है. दैट्स द पैटर्न ऑफ द मार्केट विच इज नॉट चेंजिंग. पुट इट इन योर माइंड सर. That's how the market is. After this, let's see one thing which I've observed on Nifty today is that कल हमने देखा था heavy call writers थे. आज अगर आप देखो तो both are equal, which says that the call writers are right now 20.58 crores. Put writers are 17.15 crores. आज कॉल में ओआई घटा 4.22 lakhs and put में add हुआ 3.16 crores. So this is also telling us कि हम एक बेसिंग की तरफ जा रहे हैं given the next week expiry. Do you all agree? As I say, I'm not an expert out there. Whatever is there, we are studying it for educational and informational purposes only. Anybody has any other opinion? Let me know. Agree दोनों का पलड़ा सेम है ना, तो ना अपसाइड होने देंगे ना डाउनसाइड होने देंगे. अगर अपसाइड भी नहीं है डाउनसाइड भी नहीं है तो क्या है, तो ये वाला बेसिंग आ जाएगा. अभी देखते हैं ग्लोबल माहौल कभी कभी बहुत डिटोरिएट हो रहा है तो चैनल टूट भी सकता है, लो पे भी आ सकता है, बट उसके लिए हम रोज देख के करेंगे. तो इस तरह का माहौल दिख रहा है अभी वापस से यहाँ पे. आफ्टर दिस लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. अगर मैं बैंक निफ्टी देखूं डेली पे, तो आज देखिए बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया था बिकॉज पॉजिटिव पहले हो गया था. नाउ हमने मॉर्निंग में भी डिसाइड किया था गैप को मत इग्नोर करो. आज भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी गैप के आसपास आया था विच इज द बेस. बट बैंक निफ्टी में अभी देखिए दो चीज है बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी कहाँ रहेगा, देखिए नेक्स्ट वीक आपकी मंथली एक्सपायरी भी आप ध्यान रखना. नो दैट इज नॉट फॉर द मंथ. या अभी तो मंथली एक्सपायरी आ गई तो टोटल फॉर द मंथ ही हो जाएगा. फिर भी धीरज मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. दिस इज फॉर एक्सपायरी ऑन 28th. यस, ये मंथली एक्सपायरी आ गई. गॉट इट धीरज. नाउ बैंक निफ्टी एज वी से, अभी तो आप सब एक्सपर्ट हो गए होंगे गैप थ्योरी में. व्हाट डज इट से, द कैंडल बिफोर द गैप इज योर सपोर्ट, अपसाइड गैप. डाउनसाइड गैप में पहले भी हम देख रहे थे, नाउ वी आर शिफ्टिंग पोल टिल हियर इट्स योर रेजिस्टेंस. तो बैंक निफ्टी बहुत वेल डिफाइंड है, बट बैंक निफ्टी का स्विंग रेंज भी बहुत बड़ा है. 57,000 से ले 57,500 से लेके 55,500, मतलब तीन तीन मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप देखो, मैं एक्सट्रीम ले लेता हूँ तो आई थिंक मोटा मोटी 3% आएगा, नहीं 5% है. मैं गैप ले लेता हूँ यहाँ से फाइन, और ये गैप, तो गैप टू गैप 3% है. तो क्या आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं एक मार्केट कुछ भी हो रहा है वापस से अपनी 3% की रेंज बना ले रहा है. आर यू ऑब्जर्विंग दिस फ्रेंड्स? So this is how bank nifty is. I don't see it going below this low from the swing trading perspective. When I say I means that's what the study says, or this high. Now daily we'll study bank nifty, one day up, one day down, or a pullback or a bounce with respect to the moving averages. और दो averages जो bank nifty में we are using it for resistance is the 200-day moving average. Let me take you to the 200-day moving average and I'll make it a thick blue in color. तो ये 200 DA में लग नहीं रहा, इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा अभी इमीडिएट में. बेसिंग चाहिए यहाँ पे, वी शेप रिकवरी तो नहीं दिख रहा है इस तरह का. द फर्स्ट मूव इज देयर, देन द बेसिंग इज देयर. उसके अलावा हमने देखा था प्राइस कंजेशन विच इज फ्रॉम व्हाट वी से द 50-day मूविंग एवरेज. अभी मैं प्लॉट कर रहा हूँ 50-day मूविंग एवरेज एंड द कलर विच आई असाइन टू 50-day मूविंग एवरेज विल बी ब्लैक. So today bank nifty
See, today, if you remember in the morning sessions, I had said drop a line at 50 DMA. How many of you remember that? Market opened at 50 DMA, Bank Nifty, and Bank Nifty also opened at 1 ATR. Atul, do you remember? Morning, and then it scaled up throughout the day. So 50 DMA till now it's not closing below that. The pullback or the consolidation over here. Now the see earlier the consolidation, the pole was on the upside. It has now shifted down. So अभी यहाँ पे consolidation होगा. That's all. Nothing more than that. So that's how Bank Nifty is. Fine. I'll remove it. Now अगर मैं बोलिंगर बैंड्स को देखता हूं तो बैंक निफ्टी आज लोअर बैंड के नीचे चला गया था वीकली में. It is still not tested the middle band. आ सकता है. But let's give it time. Let's have a wait and watch, and let's be open for a consolidation around the current levels. So market का जो माहौल है वो अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ. पहले कंसोलिडेशन हायर लेवल्स पे हो रहा था जिसको हम बोलते हैं हाई ऑन लोकेशन. अभी कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी लोअर लेवल्स पे मिलेगा ऑन लोकेशन. That's how the markets are. And this weekend, I'll spend today evening and tomorrow full day to write the Substack note. Make sure you read it. And this is our Substack page. Abhijit, you can go here. I'll just the page. Yeah, just give me a minute. So everybody, make sure you watch this. This is Trading Titans by Incred Money. In trips and tricks, आपको जरूर it's once a week only, and then I do the weekly note. Yesterday's webinar, it will take 1 or 2 days, Shabaki. Right? Yeah. So how many of you have subscribed? I'm taking a 2 minutes pause. Kindly confirm it to me. I want everybody of you to subscribe. I'm just taking a 1 minute break. Just everybody press OK. Vijay, have you subscribed it? It's all free. It's part of our Trading Titan community. And all the participants, Rajendra says done, subscribed already, Shabaki. Yes, I know that. Other than that, Vijay, yes, sir. Other than that, Dheeraj, I did. Chetan says, yes, sir, subscribed already. Fantastic. See, trading is a process, fine. It's not that one session, one this will get clarity. You need to have a very, very broader approach towards getting the confidence or learning the what I call all the various techniques in the sense the chart reading. So it's not at one go you can do that, fine. So you have to take advantage of all these resources which is available to you, and it's a community resources of Trading Titans, right? So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day.